Good evening. My voice is audible? Hello. Good evening. Good evening. Sir, you can open your video. Good evening. Good evening. Yes, Good evening. good evening. Good evening, Sudhirji. Hi, sir. Good evening. How are you? How are you? I'm starting. So, welcome all. Today's session on packing for industrial packing for exports, and we welcome our today's guest Sudhirji Gangurde and our speaker Ankaji Patil. Before going to start, I'll speak about just just right. I think voice is my voice is audible. Yes, perfectly okay, sir. Okay, so I'll give brief about what we do. Welcome to all people who are also on the YouTube and Zoom. We at 24 Mile, we provide total export import solutions, and we are happy to share that our digital platform got recognized on national level with the presence of Prime Minister Modi ji on 15 January 2022. Our objective is to make export reach India and create the ecosystem for export and import, because to process any one single shipment, it involves more than 25 agencies like local transport, packing, fumigation, shipping line, custom house agent, freight forwarder, free trade agreement, foreign trade policy, foreign exchange, then the marine insurance, ECC. There is more than 25 agencies are involved, and to know the all knowledge, it is very challenging, and we cannot do the export and import though you are having orders. So what we do, we are providing the ecosystem, and weekly we conduct the mentoring support call for our students, and also we conduct 1 or 2 sessions public platform in a month, and we invite industry experts or education universities to give the knowledge about the export and import. Last month we have invited one of the custom house agents who has given the process how to do the agriculture exports. Next week also we have invited CDB manager who is going to explain about the how to get the Ubharte Sitare, what is the Ubharte Sitare scheme for exporters. So this is our efforts, or we are putting time to educate to society, and we believe on the philosophy: if you help others selflessly, then whole universe will support you endlessly. So we'll welcome our today's guest Sudhirji, and I'll briefly introduce about the Sudhirji. Sudesh Gangade is a motivational speaker, corporate trainer, and life coach. He's specialized in unleashing the human potential and achieving the extraordinary result. He's an expert in the areas of personal development, self-mastery, and performance improvement. Sudesh is associated as a trainer with Think Rich India Services Private Limited, a company spearheaded by international motivational speaker and business coach Mr. Bhupendra Singh Rathod. He has conducted more than 500 webinars and addressed more than 5 lakhs people with Coach BSR through webinars, through live streaming and offline events. So I request Sudhirji to thank you. And first of all, thank you for giving your valuable time, and request to inaugurate these sessions, industrial packing for exports. Thank you so much, sir. Thank you so much. And it is my pleasure that you have invited me. And first of all, thank you so much for inviting me. And I have been acquainted with Vinayak sir for last 3 years, and he is a tremendous action taker. He is a very good hold on his expertise, that is export and import, and we all wish him best for his journey, whereby his mission is to empower India to get export rich. So 24 miles is a initiative he has started, and then we must appreciate that on national level, in front of PM Mr. Modi, he has got special recognition. So thank you so much, Vinayak sir, and special best wishes for you. And I must invite Mr. Ankur Patil sir also. He's an expert in
export import field, and he is the owner of Gulmohar Packaging Pactech India Private Limited. So all of you will see a great lesson, great learnings in terms of export and import, and all the attendees, I welcome all the attendees also, so that this learning can help you to get rich. And all of us know that India used to call in past Sone ki chidiya, like golden bird. So one and only initiative that can bring that glory again is that export. We need to become export rich, export rich. And we thanks that all the participants who are here, they are thinking in the same direction. So all best wishes for this special mission of Mr. Vinayak sir, that we must move forward and let India become a great country who is already, if you talk about the recent terms, India has got the highest growth in GDP, and he is other countries like USA and Japan also in terms of growth rate that is behind India. So this the special, we all youth of India have this responsibility on our shoulder, that we need to get back to the glory of India. As per my own experience is there, I have been part of I have been part of Tata International Limited, which was a export import house of Tata Group. So I have very good experience of export and import, and especially if you talk about today's special topic, that is packaging. Packaging plays a very important role, because once the shipment goes by sea shipment or air shipment, the packaging, it's the goods which we are sending has to be intact, to be of super quality. So today's session will help you to understand why the packaging, especially this export packaging, is important, and how can we bring this clarity in our mind that packaging is very important. So thank you so much to everyone, and welcome to each and everyone, the participants who has just joined. I welcome on behalf of 24th Mile to all of you, and formally inaugurate this special session. And thank you so much for inviting me. Ankush sir, welcome to you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Sudeshji. Thank you, Sudeshji, for your giving valuable time and inaugurating this session, industrial packing for exports. So, friends, we are going to, before going to start the sessions, I would like to introduce our speaker. So, I would like to tell you, in export, packing is doing very important role, because first thing what we see when material reaches to the customer end, because I also visited various countries, I have exported the engineering goods, and I have taken the services from Ankaji Patil. He is a director of Gulmohar Packaging India Private Limited. So I know what is the importance of this, which types of wood should be used, and what should be, because if you want to export to the Germany, then Europe, then European country, which types of pallet we should use. What we see when we, because when I visited to Thailand, one of the plant where all material was shifted from India, I have clearly seen material who was imported from Europe, their packing was different, and it was creating the impressions, different impressions. What quality is inside, that is one part. Of course, material has to be quality, but how does it look in front? What is our first impression of the our products? So that is also very important point. So in export and import, one of the important agencies, packing. If you are right packing, good quality packing, of course, sir will explain it. So I will introduce him, Mr. Ankaji Patil. He is a BSc graduate, analytical chemistry, holds foundation degree in packing science, and completed all material and testing for general awareness hazmat transport training from USA. He is a director of Gulmohar Packaging India Private Limited. Gulmohar is a trusted name in the realm of manufacturing, supplying, and exporting a wide assortment of packing material and solution. I am also experienced. I am having an experience about them because I also work with him. The technical expertise and rich experience helps in offering cost competitive solution and protecting products from damages and leakages. They are manufacturing total seaworthy material and enable them in providing the best range of products along with the international standards. They have started new manufacturing plant of 60,000 square feet in Chakan MIDC Pune with all new facilities. They also have 72,000 square feet area at Kikwi on Pune Bangalore highway for further expansions. There are 2 distribution centers in Chennai and Baroda along with all facilities. Apart from that, he is also involved in various social activity. Recently, he has organized one of the marathon, and he is also president of Rotary Club Pune.
So I welcome Ankaji Patil, and we are eager to learn about the packing parts and what are the your services, so that all our participants will get benefited, and in future they will get connected with you to get the business to get the services from you. So over to you, sir. Thank you. Thank you very much, Vinayak ji, for having this great platform of 24 miles. I am audible? Yeah, you are Yeah, audible and you can also yeah. share. Also, thank you, Sudesh ji, for introducing yourself. Already, Vinayak ji already informed about my company and everything. Yes, I would like to give my brief introduction in short. I am Ankaji Patil, founder and director of Gulmohar Pactic India Private Limited, as well as Sivargi Pactic Private Limited. We have 6 manufacturing plants in all over India. 2 are in Chennai, 3 are in Pune, and 1 is in Baroda. So today's discussion only on industrial packaging, because packaging field is very big, because there is food packaging is totally different sector. Other chemical is totally different. So I am explaining today that there is only automotive and engineering packaging. We have 18 years experience in seaworthy and airworthy packaging. We have around 400 employees who are working all over India. We are manufacturing all types of export worthy packaging material, and we are providing services to all our client at their end. In ports also, we are doing such activities like lashing and packaging activities. So, so I will share my one PPT. Yes, so first I will discuss about what industrial packaging is. After that, I will share my company presentation, what we are manufacturing and all. So, the industrial packaging means the packaging generally is the science of protecting, preserving, shipping, and likewise industrial packaging is used to protect, ship and store a wide range of industrial goods. There are some categories, that is like primary packaging, then secondary packaging and tertiary packaging. So these all are different categories, and as PPT, sir, PPT is not visible. You can not open the visible. PPT. You Yes, can open the already. PPT. Yes, already open. It is open, so you can share screen. Use the share screen option. Share screen to all. You can come back again, remove the stop sharing, then again you do the share screen option. Stop sharing. Share screen and share Share all. screen. And All. share all. Share all. Okay. Okay. Now we can see. Okay. Yes. Now it is okay. Yeah, it is okay. Yeah. So there are 3 different categories of packaging. That is primary packaging, like many companies are using a bubble roll, stretch film, and small corrugated box. And secondary packaging is, it is totally as a big carton box, PP boxes, and small and heavy duty corrugated box. That is a secondary packaging. Tertiary packaging used to protect not only the product but also it is secondary to primary packaging. Example like wooden boxes, small or medium wooden boxes, heavy duty corrugated boxes, metal boxes, or even now the returnable packaging, that plastic boxes also. So,
So now this considering the current scenario, everybody is looking for reduction of packaging material as well as logistics cost. So considering this, the container stuffing at factory, that is the main concern, and a container stuffing at port. All these two topics, the packaging and logistics cost will be reduced. It, that means if container stuffing at factory end, the packaging can be done with less and less use of material, which ultimately save cost. Minimum handling of cargo, it will not damage due to handling. Inspection at quality check assured inside the factory only. Container destuffing would be done at destination only. And if container stuffing at port or uh, at port or at CFS or any warehouse, then you have to use a primary, secondary, and tertiary packaging need to be used, which ultimately cause more cost. Multiple handling of cargo, inspection and quality check needs to be ensured at the port again, because there are many chances to damage due to multiple handling and road transit. Increased possibility of damages also. So we can reduce packaging and logistics costs. There are big chances when container stuffing at factory end only. So these type of seaworthy packaging for export, that export packaging plays a vital role in delivering goods at destination, maintain safety of products with satisfying all international rules and packaging guidelines. Different types of packaging material can be used like corrugation, plastic, wood, steel, metal in combination to export the goods depending upon the nature of product. Below are some references photographs. We are providing services depend on the product, what type of product, what type of machinery we are customer is exporting. Depend on that, what are the handling charge, how many times it will handle at port or at factory shipping at customer end. So we consider all aspects and we give proper solution. Our major focus is to reduce the packaging cost as well as the logistics cost. If you see these photographs, there are different types of photographs which are pine wood, plywood, and metal combination. Some products are with shrink packing. Some heavy duty corrugated for automotive packaging. Some are only plywood boxes like this. So in transit cargo safety also most important for heavy engineering cargoes or vehicles. These are some photographs. We are providing licensing services for flat rack containers, for general purpose containers. So these are some photographs. We are giving a proper solution for in-transit safety of heavy corrugated heavy cargoes as well as all automotive security packaging like this type of packaging. We have our expertise and we have design team for all types of security packaging. We design each and every packaging considering the packaging cost as well as logistics cost. So container optimization is the major criteria for exporting automotive parts. We design packaging boxes such a way that the maximum number of parts in each box and maximum number of boxes in each container. That is the main concept, which will save the packaging cost as well as the logistics cost. So if you see some photographs, we have designed packaging such a way that there are many parts we pack in each box, and the stacking also it is 1+2, 1+3 stacking. It is totally depend on the weight and the size of the material. So these are for automotive packaging. We have all design team and we have all manufacturing facilities in different sectors. So these are some engineering for engineering companies that is big for 30, 20, 15 tons, 20 ton engineering machinery. We are providing services for them also. These are very big boxes. So as per customer requirement, we are providing cost-effective solutions to them. If you see the fourth photograph, we design packaging for this tank. We design such type of saddles with wheels. They are earlier using for this cargo, they are using 40 feet open top container.
We design a packaging in such a way that they stuff this cargo in 40 feet general purpose container. So the cost of a logistics cost is there is very big difference. They save because open top container and general purpose container the cost very well. So we design such type of packaging for customers which will reduce packaging as well as the logistics cost. So this is the traditional to modern packaging transit. What earlier many people are using that traditional rubber wood or ply or combination with this type of boxes earlier used. Then again it convert into pine wood boxes. After that it changed into collapsible plywood boxes. And currently everywhere some all companies are using wooden pallets with heavy duty corrugated box. Now we have our new packaging concept for all automotive companies, that is modern way to export packaging, that is Dr. Shrink sleeve. So it is easy and simple application. It reduce outer box and sleeve cost. You can use you can remove that all internal corrugated boxes also. The film will give complete protection. Waterproof includes UV inhibitor. The shelf life of this film is around 1 year in open condition. So this is a totally new concept, and it will save big cost in packaging as well as logistics cost. So it will reduce the load. Even it is temper proof, and it can be easily removed or can easily see your product underneath. It is cost effective, much less expensive than building customer size wooden crates and using cardboard packaging methods. So this is our new packaging product we are introducing right now, and this is also one another method what companies are expecting right now for exporting automotive components or other small components. It is returnable packaging concept. We have all metal as well as plastic boxes for a returnable packaging concept. If you have any such type of clients who are requiring returnable packaging, so we provide that type of packaging services, and we are supplying this type of boxes also. So some cost-effective packaging what we did earlier with our some premium clients. If you see the first photograph, this is a GE project. Earlier, they are using such type of big wooden box. They are using flat container. They are doing container lashing and everything. But we design packaging and in such a way that same cargo we stuff in 40 feet general purpose container without wooden box, without lashing. So that is our expertise. If you see the second photograph, that is packaging being by Thermax. So they are using that such type of big wooden boxes for their Indian packing. So we give them solution. The wooden box life shelf life is only 6 months. After 6 months, they have to reuse or repack again. But we give them solution with the Dr. Film. The shelf life of the film is around 2 years. Even we can store it in open condition. The film will protect inside products also, and the shelf life of the film is also 2 years. So such type of innovation we did, and we are already giving many to many this type of products, and we are providing services. If you see this type of packaging, we removed all wooden carton stuffing, everything. We removed all packaging material, and we use only one single film on the flat wrap container. So it will hold the material, it will protect the material. So you can imagine what is the cost difference between all wooden boxes, corrugated boxes, and this is only one single film. So these are the new concepts which we are already introduced. We are the sole company. We are the only company who introduced this type of products, and we are supplying many engineering and automotive companies.
This will save so many packaging costs, or you can say it is only a single line. The film life is, again, I will say that the shelf life of the film is 2 years. When it is introduced this, because We introduced this product in 2009. This is our own product, and it is a globally patented product. And we are giving and we are providing, because it is totally wood replacement, corrugation replacement. Even you can use on small pallets. Even you can use it is very directly on the cost shelf. effective. Cost effective. Yes, very cost effective and easy to apply. So now this we have fumigation and heat treatment also. This is a major concern who are exporting the material, because now fumigation is so much risky, because nobody is doing proper treatment to wood. Only they are giving providing certificate. So in that case, many clients and even logistics company also will be in trouble because of this wrong practice. So whenever you export wooden material, you have to do fumigation properly as per ISO standards, or you have to. There is one another option. You have to do heat treatment, and if you are not doing such type of practice, then it will be a big trouble in coming days, because everywhere there are strict norms, and some countries are especially watching this type of wrong practices. So you have to be 100% sure that treatment of fumigation, wooden treatment, that is fumigation or heat treatment, must it is not only giving the stamp and certificate. So everybody have to focus on this. Now we are introducing this another new product, that is tracking the shipment movement, that is stopwatch and tilt watch. It will give a proper indication. Many times some damages occurs, and customer claims, or it is totally total responsibility came on packaging company or a logistics company. So these type of products, if you use with your consignment, it will indicate what exactly happened in transit with that consignment. So it records the stock, it records the tilt, that, and even humidity indicators also we are providing. So it will give a correct uh, a date, time, and what happened with that consignment. So you can easily find out, and you can show the actual condition of the cargo. So these are some new products we have already introduced. I will share my company presentation, what we are exactly manufacturing and what we are providing services. I will share another question, presentation. If any questions, you can ask me after this presentation. I will share another my company profile presentation. Meanwhile, if you have any questions, you can put it in chat box, so that I will read it and I will convey to the our speaker. Huh? Yeah. You can open the presentation. Is it okay? Yet we cannot see the presentation. Okay. Again, stop sharing and stop sharing and. Okay. Okay. Yes, you can. We can see. Yes. So Gulmohar is establishment in 2004. Manufacturing, that is already we have discussed, is ISO certified company, and our premium products are certified by Indian Institute of Packaging,
ARAI, BFSC Germany, ILS, and German Lloyd. So I will take it to what we are manufacturing. So we are manufacturing all types of wooden boxes. We are providing a container lashing for in transit safety. We are manufacturing all types of regular corrugated boxes as well as we are manufacturing heavy duty corrugated boxes. We are manufacturing all types of polythene films, LDPE films, and we are manufacturing corrosion protection film, that is VCI film. I have already discussed this is we are manufacturing Dr. Shrink wrap also. We have our own fumigation license and we have our own heat treatment plant for wooden. We are manufacturing desiccants, container desiccants like silica gel and all. So we are manufacturing all types of aluminum etching foil bags. We are manufacturing HDP Secilin cocoon wrap covers for heavy engineering machinery. We have our own engineering and fabrication setup. In this, we have shared some wooden packaging boxes, like full wooden boxes, crate type boxes. We are design different types of saddles for cable drums and all. We have different types of packaging combinations like metal plywood, metal ply or fine rubber. These type of boxes we are manufacturing and providing services to customers. This is one-way latching system. We are manufacturing all types of straps and it is Germany Sir Lloyd certified. If you see that these are all flatter containers, we give container latching services to all our clients. We are manufacturing this all types of heavy duty corrugated boxes. This is for majorly in automotive and pharma sector. So again, this is corrosion protection packaging film that we are. It is for all automotive and engineering components. This is also we are our manufacturing plant. It is certified by ILS Germany and it is PRJ 615 certified. For this product, we are the global supplier for Volkswagen and GE and all automotive companies. So are you also exporting some packing material? Are you exporting or no? No, not exporting packaging material. Some companies like Tata sub vendors we supplied many times, but now we are not supplying exporting directly. Okay, you are just using as a packing material only. Yes, yes, yes. For who are exporting, we are providing them services as well as all that. That is okay. That is the packing solution you are giving. Yes, yes, but yes. directly you are not directly. We are not exporting directly. Packing material not exporting because yes. Okay. Okay. This is Dr. Shrink wrap. This is the film. I already told you that the film shelf life is 2 years. So we are packaging so many engineering products. We removed 100% wood, and this is a very useful packaging material, and it is recyclable, reusable, and this is the new concept what many companies are accepting right now. Now we have all as per the ISM 15 standard, we have this type of setup and we are doing fumigation as well as heat treatment activities. We are manufacturing and supplying this type of container desiccants and small pouches, silica gels and all. So everybody knows about this packaging material. So silica gel, you are yes, we are manufacturing pouches in our factory. Even there are different types of desiccants. Even clay desiccant is totally different. Natural clay desiccant is totally different. It depends on the product and sensitivity. Okay, so you are manufacturing it and you are yes, all products we are manufacturing in our plant. Okay. So this is aluminum foil. This film also we are manufacturing. If you see this photograph, we remove 5 sides wood. We just pack equipment on only one wooden base. We removed all 5 sides of wooden box and we use this film and we directly export to the client. So it will reduce packaging cost as well as logistics cost. Majorly we are working on
packaging as well as logistics cost. Container optimization is the main criteria what we are focused on. This is actually in cocoon wrap and different types of HDP covers what we are supplying to many clients. So this is for they are using for domestic purpose also and for export purpose also. So Now, some exporter might be buying the packing material from you, and they're doing their own packing, right? so yes, yes, some companies are buying material. They pack their material at their end, but many companies like big engineering companies like Thermax, Alpha Level, at we are providing services at their end and also. We'll Okay. supply material from our factory to them, and our team will go and they pack that material as per standard. Right, So, right. so we are providing services all over India, anywhere in port or any area. Our team will go there along with material. They will pack all packaging as per standard. Okay, okay, okay. So we have engineering setup also. We are many times customer are asking for returnable packaging. We do not want to use wood and something like that. So we will give such type of solutions to them also. So even I have already shared this humidity indicators, of field watch and all. We have all consumable packaging material. Some products are we are already manufacturing. Some products are bought out. Like we are manufacturing textile, bubble and all. These are our factory setups. Uh, Mostly. located in, yeah, Bosri, Chakan, Chennai, and Vadodara. These are some manufacturing facilities what we have in Pune, Chakan, and Chennai. Okay, so that's all from my side. If any questions, please ask me. So participant, if you have any questions, you can ask him. You can put it in the chat box. So I will convey to him. I'll ask the questions. Uh, so any basic question you can also ask. So what is the importance packing का sir importance क्या है मतलब ये export में suppose packing good quality packing है और मैंने देखा है मतलब my experience is many of the exporter what they do the good quality packing because if it is going to Europe, so it should look because of course we have to export the quality material, but along with quality material also it should also look good. Yes. What is एक्चुअली मेन इसमें सबसे मेन रीजन मैं आपको बताता हूँ कि पैकेजिंग एस्थेटिकली जो अच्छा दिखना चाहिए उसके लिए हम यहाँ पे क्यों नहीं होता है वो चीज तो मेनी कंपनीज हु आर एक्सपोर्टिंग फर्स्ट टाइम दे डिडंट कंसीडर द पैकेजिंग कॉस्ट राइट एंड जब जब ऑर्डर मिल जाता है उसके बाद जब कस्टमर से पैकेजिंग स्टैंडर्ड जब आते हैं तब जाके उनको पता चलता है कि ये पैकेजिंग स्टैंडर्ड है इस तरह से उसको पैकेजिंग करना है तो उसके बाद जब ये पैकेजिंग कॉस्ट एडिशनली इनके ऊपर जब आ जाता है तो वो लोग फिर कुछ अलग मटेरियल टाइप जैसे पाइन वुड यूज करना है तो रबर वुड यूज कर लिया कुछ गलत पैकिंग करके एस्थेटिकली अच्छा नहीं है क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं है क्योंकि कॉस्ट मैटर करता है तो ऑलवेज जब भी कोई क्लाइंट को जैसा भी काफ़ी सारे लॉजिस्टिक्स कंपनी अगर लाइन पे है तो उनके लिए मेरा सजेशन है जब भी आप प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रहे हैं कंप्लीट पैकेज दे रहे हैं पैकेजिंग विथ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपको पैकेजिंग कॉस्ट कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि पैकेजिंग कॉस्ट अगर सही से आपने कंसिडर किया है तो ही आपका कार्गो सेफली कस्टमर एंड तक पहुंचेगा अदरवाइज अदरवाइज वो आपको ज्यादा नुकसान देता है कहीं डैमेजेस आ गए तो उसका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वो आपको ही फेस करना होता है मटेरियल हाँ मटेरियल के नाम पे इवन बहुत बार ऐसा होता है कि कंटेनर डैमेज हो जाता है क्योंकि सही पैकिंग नहीं है तो टूट गया तो कंटेनर में ही इक्विपमेंट लूज हो गया और कंटेनर डैमेज भी हो गया तो ये सब चीजें रेगुलरली होती है तो सबसे इम्पोर्टेंट है मैंने जैसे इनिशियली फर्स्ट प्रेजेंटेशन में देखा कि अगर कोई क्लाइंट को आपको अगर पैकेजिंग और लॉजिस्टिक कॉस्ट के ऊपर सब लोग अभी रिडक्शन मांग रहे हैं आपको कभी भी ये चीज एक सिर्फ ध्यान रखना है अगर फैक्ट्री स्टफिंग आप करते हैं तो आपके लिए इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप पैकेजिंग कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स आप कंटेनर में लोड कर सकते हैं लेकिन सिर्फ वो तभी पॉसिबल है जब आपका फैक्ट्री स्टफिंग रहेगा कस्टमर एंड पे क्योंकि वहाँ पे जो कंपोनेंट पैक होगा वो डायरेक्टली कस्टमर एंड पे उसको निकाला जाएगा
तो ये चीज में अगर आप पोर्ट में या कहीं आपके वेयरहाउस में लेके जाके वहां पे अगर कंटेनर शिपिंग कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसका जो हैंडलिंग है एटलीस्ट 8 से 10 बार उसको हैंडलिंग होगा, अलग अलग इक्विपमेंट से होगा। कोई फोर्कलिफ्ट से उठा रहा है, कोई राइट क्रेन से उठा रहा है, कोई पता नहीं है उसके ऊपर स्टैकिंग कर रहा है, क्योंकि वहां पे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं बॉक्स के ऊपर, फिर भी कोई वेयरहाउस में ये चीजें पॉसिबल है। और बहुत बार क्या होता है कस्टम्स वाले उसको फाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं फॉर इंस्पेक्शन। प्रॉपर नहीं हुआ तो हाँ। पैकिंग बी गुड। हाँ, तो नॉर्मली अगर कस्टमर कस्टम्स में हर एक चीज को खोल के चेक किया जाता है कि इसके अंदर एक्चुअली वही मटेरियल है, नेम प्लेट चेक किया जाता है। तो हम उस केसेस में भी हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, कस्टम इंस्पेक्शन विंडो हम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बॉक्स को डैमेज ना करे, इंटरनल पैकेजिंग को डैमेज ना करे। अदरवाइज फिर रस्ट के इश्यूज आना चालू हो जाते हैं, अंदर पानी चला गया, क्योंकि कस्टम ने एक बार उसको तोड़ा या उसको फिल्म को कट किया, उसके बाद उसको वो रिपेयर नहीं करता है, तो ये कस्टमर एंड पे जाने तक वो पूरा रस्ट होगा या डैमेज होगा। तो ये चीज़ों को ऑलवेज ध्यान रखना है कि बराबर। ज़्यादा से हाँ, ज़्यादा आप फैक्ट्री स्टफिंग करते हैं तो इसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा है, कस्टमर कंप्लेंट्स कम रहेंगे। तो कंपोनेंट के हिसाब से हम पैकेजिंग डिजाइन करते हैं। अगर मुझे वेयरहाउस में जाके पैक करना है तो मुझे बॉक्स बना ही बनाना है, मैं सिर्फ पैलेट के ऊपर उसको भेज नहीं सकता, राइट। क्योंकि उसके ऊपर कौन क्या रखेगा मटेरियल उसका कोई मतलब ये नहीं है। स्टैटिक मेरा एक एग्जांपल है। हाँ। लास्ट मंथ में हमारे क्लाइंट ने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, और वो एक्सपोर्ट करते हुए क्या किया, टू सेव द, एक ही गाड़ी में भेजने के लिए व्हाट दे डू, दे हैव स्टैक दैट मटेरियल, मतलब हेवी था मशीनरी नीचे भी, अराउंड 700-800 केजी का, उसके ऊपर 700-800 केजी का रखा। तो ड्यूरिंग ट्रांजिट क्या हुआ, वो नीचे का मटेरियल था वो दब गया, अगेन वी हैव टू द रीपैकिंग। नहीं, तो वो नॉर्मली क्या होता है, हाँ, जब पैकिंग कंडीशन रहेगा तो यू हैव टू बी चेक योर बॉक्स स्ट्रेंथ, जो टॉप स्ट्रेंथ होता है बॉक्स का वो पैकिंग कंडीशन का है या नहीं है, ये सबसे इट वाज इम्पोर्टेंट है। वेरी बिग बिग एक्चुअली, वो डिसीजन था, वो क्लाइंट ने लिया हुआ डिसीजन था, इट वाज रॉन्ग डिसीजन। हाँ। वो उन्होंने स्टैक कर दिया कि उनको लगा कि एक गाड़ी, एक ट्रक में जाने से की जगह हम दो ट्रक की जगह एक ट्रक का सेव करेंगे, लेकिन बाद में एयरपोर्ट में जाने के बाद हमारा 5 to 6 डेज गया, पैकिंग कॉस्ट इनकर हुआ, बाद में डिटेंशन डेमरेज आ गया। तो और मुझे एक मैं इसमें सजेशन बोलता हूँ, इस टाइप का जब कभी कस्टमर बोलता है कि नहीं हमको इसी तरह से भेजना है, तो इसको एक और सेफ्टी आप उसको यूज कर सकते हैं। उसको दो बॉक्सेस को आप अगर यूनिटाइज करते हैं लैसिंग स्ट्रैप से, अगर उसको यूनिटाइज करके गट्ठा बनाते हैं, दो स्ट्रैप लगा के उसको यूनिटाइज करके फिर दो बॉक्स एक साथ उठा के आप गाड़ी में रख देंगे ना, तो आपके बॉक्सेस डैमेज होने का चांसेस बहुत नहीं कम नहीं, हो उसका जाएगा। क्या हुआ कि ड्यूरिंग ट्रांजिट हुआ, हाँ, पुटअप ड्यूरिंग कर। तो है, लेकिन अगर नीचे का बॉक्स और ऊपर का बॉक्स अगर ये दोनों एक दूसरे से बंधे नहीं है, पैकिंग नहीं हुआ है उसका, तो वो डैमेज 1-2 किलोमीटर में ही होगा। हाँ, अगर तो ये स्टैपिंग है तो वो डैमेज होने के चांसेस उसके कम हो जाएंगे, हेवी था। क्योंकि हाँ, तो वो ट्रांजिट में वो उसका मूवमेंट आ गया तो वो डैमेज डेफिनेटली होगा। ठीक है सर। नारायण बडवे हमारे एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने पूछा है कि व्हाट काइंड ऑफ पैकिंग इज प्रेफर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, दैट इज बेयर पीसीबी और फिनिश प्रोडक्ट्स। नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए जो डेलिकेटेड पार्ट्स होते हैं उसके लिए नॉर्मली अभी फोम फैब्रिकेशन होता है, जो पॉली इथिलीन फोम होता है, उसको प्रॉपरली डाई कट करके, क्योंकि एक तो वो लाइट वेट होता है, इससे आपको नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बाय एयर भी अगर आपको भेजने हैं तो उसका वेट कम होगा। और फोम कटिंग करके उस एज पर मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स है, मैं उनको शेयर करूंगा बाद में, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पैक होते हैं। तो पी फोम में इसको पैक करके आप प्राइमरी पैकेजिंग बॉक्स में इसको यूज कर सकते हैं। इवन कहीं पे अगर वो ड्रॉप हो गया बॉक्स, कहीं पे गिर गया तो भी उसको डैमेज नहीं होगा। So always use PE foam, that is polyethylene foam, with proper shape cutting and everything. ओके। So that facility we have in our plant. I will share some photographs and some designs to him, so ठीक they है। can use same concept. ओके सर, नीरज ने पूछा है, सर जी। व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट इनकर फॉर पैकिंग, मतलब पैकिंग के लिए कॉस्टिंग क्या होता है, जी, इसके देखिए, जनरली। हाँ, it is again depend on the product cost ना। नॉर्मली जो थंब रूल के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लॉजिस्टिक कॉस्ट एवरेज 15-20% से लेके 25% तक जाता है। लेकिन पैकेजिंग कॉस्ट का अगर मैं थंब रूल बताऊं, जो नया कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो 3 to 4% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके।
प्रोडक्ट कॉस्ट के 3 to 4%। मेनी टाइम्स कभी 10% में भी जाता है, तो वो रॉन्ग प्रैक्टिस है या उन्होंने अच्छे से पैकेजिंग डिजाइन नहीं किया है। एवरेज कॉस्ट ऑलवेज 3 to 4% के ऊपर जाना नहीं चाहिए, फिर वो कोई भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हो, कोई भी ऑटोमोटिव प्रोडक्ट हो। नॉर्मली अभी टारगेटेड, हमारा टारगेटेड है कि एटलीस्ट 2.5% तक ही हम उसको कंसिडर करें, लेकिन एवरेज फॉर एस्थेटिक लुक, फॉर स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग, दैट इज अगेन द सेम। मल्टीपल हैंडलिंग आया तो पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ेगा, सिंगल हैंडलिंग आया, जैसे मैंने बोला, जो मेन एस्पेक्ट है कंटेनर स्टफिंग कहाँ पे हो रहा है फॉर एक्सपोर्ट के लिए। यहाँ कंटेनर स्टफिंग अगर फैक्ट्री में है तो आपको पैकेजिंग कॉस्ट 1% पे भी लेके आ सकते हैं, 1% से भी नीचे लेके आ सकते हैं। ओके, So that is main reason why packaging cost increase. Not is the biggest reason is that factory stuffing है तो आपका पैकेजिंग कॉस्ट 1% से भी नीचे ला सकते हैं। ओके। या सर एग्रीकल्चर के लिए आपको क्रेट बीट्स भी, कैन यू सप्लाई द क्रेट्स एग्रीकल्चर की जो पैकिंग होता है? नहीं, नॉर्मली एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के लिए हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको श्रिंक फिल्म मैंने बताया, तो जो हाँ, एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स होते हैं उनका कॉस्ट बहुत कॉम्पिटिटिव होता है, और डोमेस्टिक लेवल पे या एक्सपोर्ट करना है उनको, उनके लिए बॉक्सेस वगैरह उनके लिए कॉस्टिंग में बैठते नहीं है, तो उनके लिए हमने ये फिल्म डिजाइन की है। नॉर्मली उनको भी हमारा काफी कंपनी से सप्लाई है, वो सिर्फ एक फिल्म के ऊपर उनका मशीनरी एक्सपोर्ट होता है या डोमेस्टिक लेवल पे चला जाता है नॉर्मली। हाँ, बाकी ग्रेट फॉर्म वगैरह हम करते नहीं है। ठीक है। जय ने पूछा है व्हाट शुड बी द पैकिंग फॉर मेटल ऑटोमोबाइल पार्ट्स? Yeah, I have metal automotive. Already I have shared some photographs. We have अभी ऑटोमोटिव पैकेजिंग में अगर डिटेल में आप जाएंगे तो पहले सबसे पहले यूज होता था पाइनवुड बॉक्स, उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया कोलैप्सिबल बॉक्सेस में, जैसे प्लाईवुड के कोलैप्सिबल बॉक्सेस में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू कॉस्ट एंड ऑल। उसके बाद अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो हेवी ड्यूटी कोरुगेशन बॉक्स और पैलेट का चल रहा है। उसमें बहुत सारे अलग अलग डिजाइन होते हैं। हमारा मेन फोकस वही है कि एक बॉक्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट विदाउट एनी डैमेजेस हम उसमें फिक्स कर सकें। मैंने ऑलरेडी कुछ फोटोग्राफ शेयर किए थे मेरे प्रेजेंटेशन में, तो वो हमारा है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस इन ईच कंटेनर, दैट इज फुल कंटेनर ऑप्टिमाइजेशन इज द मेन कंसर्न। राइट, वो हमारा फोकस रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट एक बॉक्स में हम किस तरह से बिठाएंगे, पैकेजिंग कॉस्ट कम करके, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्सेस हम कंटेनर में किस तरह से लोड कर सकते हैं, सारी कंडीशंस को देखते हुए कि 1+2 पैकिंग है, 1+1 पैकिंग है, वो सारे चीज़ हम कंटेनर प्लानिंग और प्रोडक्ट डिज़ाइन करते समय ही ये हम सारी चीज़ें कैलकुलेट करके हम पैकेजिंग डिज़ाइन करते हैं। मेटल पार्ट्स के लिए हम नॉर्मली जो बहुत ज़्यादा हेवी है उसके लिए क्रेट फॉर्मेट में हम यूज़ करते हैं। सिंपल वुडन बॉक्स होता है जिसको फुल पैक नहीं किया जाता है, क्रेट फॉर्म में रहता है, जस्ट साइड प्रोटेक्शन के लिए कुछ प्लैंक्स यूज होते हैं, और बीच में सारा फोम फैब्रिकेशन होता है जिसमें ये पार्ट वर्टिकली उसमें फिट किया जाता है। और ये बॉक्सेस हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि ये नेलिंग वाले नहीं होते, इसमें नेल नहीं यूज होता, इट इज ऑल स्क्रू फिटिंग। So you can use that box again and again. Even you can store your product in that box for 6 months or 1 year in uh, in your factory, and you can export again with same box. Even you can reuse that box again. तो इस टाइप का हम पैकेजिंग नॉर्मली डिजाइन करते हैं। जो छोटे कंपोनेंट है जिसका वेट कम है उसके लिए अभी हेवी ड्यूटी कोरुगेशन हो रहा है। अभी हमारा जो नया कंसेप्ट है, हम अभी कोरुगेटेड बॉक्स को भी हम एलिमिनेट कर रहे हैं। जो मैंने श्रिंक फिल्म का सिर्फ पैलेट और उसके ऊपर कंपोनेंट और एक श्रिंक फिल्म रहेगा सिर्फ, जिसको ना स्टैपिंग की जरूरत है ना आउटर प्रोटेक्शन की जरूरत है। लेकिन अगेन सेम, यू हैव टू जो कंटेनर स्टफिंग आपके फैक्ट्री में होना जरूरी है। आप एक बार वो कोरोगेटेड बॉक्स की आप एलिमिनेट कर रहे हैं जी, तो मतलब क्या दिखा रहा है? कैन यू शो इट, क्योंकि इम्पोर्टेंट अभी है। हाँ, मैं आपको फिर से वो पीपीटी में शेयर करता हूँ। हाँ, वो क्योंकि क्या है, इम्पोर्टेंट है ये कि क्योंकि राइट नाउ मेनी ऑफ द मतलब पीपल आर यूजिंग द कोरोगेटेड बॉक्सेस। यस और लो मतलब जिसका ज्यादा वेट नहीं है, वॉल्यूमेट्रिक कार्गो है, देयर इज नो वेट, उसके लिए ये कर रहे हैं ना कोरोगेटेड बॉक्स दे आर यूजिंग। जी जी जी।
अभी अगर आप थर्ड फोटोग्राफ देखेंगे तो एवरीबडी इज यूजिंग दिस टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल राइट नाउ, राइट? हाँ, ओके। तो व्हाट दीज आर द ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। जिन्होंने अभी मुझे क्वेश्चन किया कि मेटल पार्ट्स को आप किस तरह से पैक करते हैं, तो आप देखेंगे सारे सीकेडी पैकेजिंग है। जैसे गाड़ी के पार्ट्स है, मेटल पार्ट्स है, तो हमने हाँ, तो उसमें सेविंग हो जाता है उसमें, हाँ मतलब यूज। काफी सेविंग है। आप अगर बॉक्स देखेंगे तो इट इज नॉट फुल बॉक्स, इट इज स्ट्रेट फॉर्मेट में है राइट, राइट, राइट। इसमें। और ज्यादा से ज्यादा पार्ट हमने बॉक्स में दिखाए, और ये सारे बॉक्स स्क्रू फिटिंग वाले हैं। आप इसको कहीं से भी डिसमेंटल कर सकते हैं, कहीं से भी यूज कर सकते हैं। और ये लॉन्ग टर्म के लिए आप कम से कम 2-3 साल तक भी इस बॉक्स को आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब नॉर्मली पैकिंग अभी मटेरियल वी कैन रीयूज कर सकते हैं आप। रीयूज पूरा पैकेजिंग मटेरियल आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वो जहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है वो भी उसको फिर से यूज कर सकेगा, क्योंकि ये पूरा टोटली हीट ट्रीटेड वुड है। इसका लाइफ कम से कम 3 साल तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये पूरा एस्पेक्ट कंसिडर करके हम पैकेजिंग डिजाइन करते हैं। तो अ, इसलिए एमएनसी कंपनी है, वो एमएनसी कंपनी रहेगा, वो प्रेफर करते रहेंगे कि ये चाहिए, क्योंकि वो रीयूज यस कर यस, सकते हो। हाँ, क्योंकि सेम प्लांट उनके सेम प्लांट में अगर वहाँ पे जा रहा है तो वो अगेन दे आर यूजिंग दिस बॉक्सेस फॉर स्टोरेज और फॉर अगेन रीपैक इट एंड अगेन रीएक्सपोर्ट टू अनदर डेस्टिनेशन। तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे पैकेजिंग जिस तरह से चेंज होते आ रहा है, स्पेशली इन ऑटोमोटिव। अभी ये पहले ऐसे रबर वुड और पुराने जंगल वुड में वगैरह यूज होता था, पाइन वुड। उसके बाद पाइनवुड पे कन्वर्ट हुआ, उसके बाद कोलेप्सिबल प्लाईवुड के बॉक्सेस में आ गया। अभी जो ट्रेडिशन, अभी जो चेंज आया, अभी जो ट्रेंड है वो हेवी ड्यूटी कॉर्रुगेटेड बॉक्सेस और पैलेट का है। अगर मैं आपको ये चीज दिखाऊं, अभी इसमें एक्चुअली फोटोग्राफ में आप अंदर के साइड देखेंगे तो छोटे कॉर्रुगेटेड बॉक्सेस है। राइट। नॉर्मली इस बॉक्सेस को होल्ड करने के लिए एक आउटर स्लीव बॉक्स यूज होता है अभी, तो वो स्लीव हट जाएगा। इवन अगर पार्ट्स जो है ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स भी अगर है और वो स्टडी है, इसमें बीच में पार्टीशन और हम हनीकॉम पार्टीशन और प्लेट्स अगर हम रख देते हैं और एक के ऊपर एक मटन स्टैक होता है, तो ये जो प्राइमरी पैकेजिंग बॉक्सेस यूज हुए हैं, कॉर्रुगेटेड बॉक्सेस, ये भी 100% एलिमिनेट होंगे। तो वो भी हमने बहुत जगह पे किया है। तो सीधा डायरेक्टली पार्ट पैलेट के ऊपर अंदर पार्टीशन एंड प्लेट एंड ओनली दिस सिंगल फिलिंग फिल्म। इस फिल्म का सेल्फ लाइफ है 1 साल। ये जब आप इसको श्रिंक करेंगे तो श्रिंक करने के बाद इसको कोई स्क्रैपिंग की जरूरत नहीं है, ना ही ये पार्ट्स उसकी जगह छोड़ेंगे। तो इतना स्ट्रॉन्ग फिल्म है। ये हमारा अभी नया कंसेप्ट है पैकेजिंग का, जो अभी आगे धीरे धीरे यूज करना चालू हो जाएगा, एक्सेप्टेंस आएगा कस्टमर का, क्योंकि इसके ऊपर अभी ट्रायल भी चल रहा है और काफी जगह पे शुरू भी हो गया है। तो ये नया कंसेप्ट है पैकेजिंग का, क्योंकि हर एक कंपनी का सिर्फ फोकस यही है कि पैकेजिंग कॉस्ट किस तरह से कम किया जाए, लॉजिस्टिक कॉस्ट किस तरह से कम किया जाए। तो इस हिसाब से हमने ये नया कंसेप्ट अभी डिजाइन किया है और इसके ऊपर हमारा अभी काम भी चालू है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। सर, और एक पूछना है, हाउ डू यू, मतलब ये मार्केटिंग कैसे आप करते हो? ये जो अभी यू आर सिंस 2004 से यू आर इनटू बिजनेस, सो आप मार्केटिंग कैसे करते हैं एक्सपोर्ट का? हाउ डू यू कनेक्ट विद द एक्सपोर्टर्स? अभी आपके पुणे में है, बाद में चेन्नई में तो मार्केटिंग के लिए व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी? एक्चुअली मार्केटिंग के लिए जो सोशल मीडिया है और इतने 15 साल से जो रिलेशन है कंपनियों के साथ, वही बिजनेस जनरेट करती है। क्योंकि अभी अगर मेजर कंपनीज में हमारा नाम आता है इंडिया में, क्योंकि मेरी एक ही कंपनी ऐसी है जिसके यहाँ पे सारे पैकेजिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। ओके। सर्विसेज तो प्रोवाइड कस्टमर को करते ही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हमने हर चीज खुद से बनाई है ताकि कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। कोई चीज आउटसोर्स नहीं करते हैं। डिजाइन टीम पूरा हमारा खुद का है। हम कस्टमर्स के यहाँ से पार्ट्स लेके, अभी अगर ऑटोमोटिव में देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारी कंपनियों का हमारा सप्लाई है। वोक्सवैगन से लेके जॉन डियर, टाटा, महिंद्रा, फिएट, फोर्ड, निसान, and even for engineering companies we are supplying many customers like Thermax, Taj, Alfa Laval, Sandvik, Actros, GE, Fashion Group. There are many players and we are providing services as well as we are supplying material at their all locations as well as their vendors. So मार्केटिंग ज़्यादातर हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल पे है, या फिर हमारा एक मार्केटिंग का छोटा टीम है
क्योंकि इसमें इनिशियल डेवलपमेंट से आपने लेके एंड। रिमूव किया तो भी, स्टॉप शेयरिंग किया तो भी चलेगा। हाँ। जी। हाँ। तो मार्केटिंग का टीम है जो जो इंक्वायरी फ्लोट होते हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं ऑर्डर्स में। तो मेन चीज़ है कि जो आज तक के रिलेशन पे जो नाम है उसके ऊपर भी काफी सारा बिजनेस जनरेट होता है। सर आपका जो पैकिंग का जो काम है, मतलब ये जो फील्ड है, आई नो इट इज वेरी मतलब लेबर इंटेंसिव है। जी। और इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट पार्ट ये है लॉजिस्टिक का। प्रेशर बहुत रहता है क्योंकि आई आल्सो वर्क विद गुलमोहर। व्हेन मटेरियल इज रेडी, so always customer in a hurry and supplier in a hurry to get it done within a 2 hour 3 hours, and because their vessel is also scheduled, so there is all pressure is on packing team. यस। So that is very challenging, and you must be getting. Matlab, now also you are in office. You said that you are still you are in office, यस। right? So यस। how do you handle that pressure, and एक्चुअली how do you handle that? Because that is very pressurized job to you as well and your team also, labor intensive. एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्चुअली मेरा जो अभी हमारे यहाँ पे जो टोटल पैकेजिंग का लोगों का जो स्ट्रेंथ है वो 400 लोगों का है। तो मल्टीपल लोकेशंस पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चालू करने का ये सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि हम कस्टमर को अगर मेरा सिर्फ पुणे में फैसिलिटी है तो मैं चेन्नई पे लोकेशन पे जाकर मैं उसकी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकता। मुझे वहाँ पे किसी और का सपोर्ट लेना पड़ेगा। इस हिसाब से हमने जो मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है जहाँ पे, जैसे गुजरात में है या तमिलनाडु में है और पुणे में है, महाराष्ट्र में, तो ये जगह पे हमने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ पे हम कस्टमर को अ, उसके डोर स्टेप पे हम मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं प्लस सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारा मेन सबसे जो हमारा कोर स्ट्रेंथ है वो यही है। और सारी टीम 15 साल से इस फील्ड में काम कर रही है, तो जो एक्सपीरियंस है वो हमारा सबसे ज़्यादा है इस फील्ड में। आपने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि हम बहुत बार ऐसा होता है कि आज ऑर्डर आ जाता है और कल उसको पैक करके कंटेनर सेट करना है, Right. लैसिंग करना है। तो ये सब चैलेंजेस इसका एक्सपीरियंस है। और अच्छी टीम है, टीम वर्क है, इसके हिसाब से हम हर एक कस्टमर को उसके हिसाब से हम सर्विसेज प्रोवाइड करते तो हैं। आपके पास वही क्वेश्चन मेरा है, आपके पास वो एक्स्ट्रा लोग रहते, सपोज इफ आई गिव द ऑर्डर, क्योंकि मेरा भी अभी यस। नेक्स्ट वीक में एक शिपमेंट जा रहा है, तो जी। वो पैकिंग का दिया आपको, तो आपके पास वो कैसे, हाउ डू यू मैनेज द रिसोर्स? बिकॉज सपोज ऑर्डर नहीं मिला तो आपका वो रिसोर्स का आपको कॉस्ट तो बियर करना नहीं, पड़ेगा। इसमें कैसा है कि हमारा जहाँ जहाँ पे भी पैकेजिंग के टीम अवेलेबल है, वो उसके लिए कहीं ना कहीं काम अवेलेबल रहता ही है। जितना क्लाइंटल बेस हमारा 350 कंपनियों का क्लाइंटल बेस है, तो कहीं ना कहीं वो टीम के लिए पैकेजिंग एक्टिविटी होती है एवरी डे। जहाँ पे एडिशनल पैकेजिंग आती है तो हम हमारे फैक्ट्री की जो मैन पावर है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है उस टीम को हम इमरजेंसी केस में यूज करते हैं। ओके, इस हिसाब से हैंडल होता है। वेरी गुड। तो मतलब आप वो यू आर यूटिलाइजिंग योर प्रोडक्शन टीम व्हेन देयर इज यस। अर्जेंसी, तो इफ देयर प्रोडक्शन इज टीम को अर्जेंट। वो अर्जेंसी में यस। वहां शिफ्ट कर रहे या हो और बेसिकली इट इज हैपेंड इन लोकल एरिया ओनली। जहाँ पे आउट स्टेशन होता है तो वहाँ पे आउट प्रोफेशनल स्टेशन से पैकेजिंग ही टीम करंट है। होगा। तो हाँ, जैसे हम कांडला पोर्ट में हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मुंद्रा पोर्ट पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ जेएनपीटी में हमारा कोई फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि रीजन है अलग अलग। लेकिन कस्टमर एंड पे हम कहीं पे भी जाके यूपी में हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एमपी में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इवन हिमाचल प्रदेश में भी हमने काम किया। तो वो कोई हमारे लिए बड़ा चैलेंज नहीं है। ओके सर, हमारे यहाँ जो है ना, वी कंडक्ट द कोचिंग सेशन, सो वी आर पार्टिसिपेंट जो है वो दे आर मतलब दे वांटेड टू स्टार्ट देयर एक्सपोर्ट्स, तो ओके। उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? मतलब उनका अभी एक जो है गुजरात से, दे आर इनटू, एक मिनट, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इसके लिए क्या कर सकते हैं, उनका प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज अ, एक मिनट, सर मेरा लेडीज कुर्ती और ड्रेस मटेरियल है, तो उनका है, तो उनके लिए अभी उनके लिए क्या पैकिंग होना चाहिए, जस्ट आपका ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, आई नो यू आर डूइंग इनटू इंजीनियरिंग एंड देखिए ऑटोमोबाइल। इस टाइप के आइटम्स के लिए आपको सबसे ज्यादा पैकेजिंग इस तरह से डिजाइन होना चाहिए जिसका वेट कम हो, है ना। जितना लाइट वेट पैकेजिंग मटेरियल रहेगा उतना आपका फ्राइट कॉस्ट कम होगा। नॉर्मली इस टाइप के कंसर्न में जब आप अगर बाई एयर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपका पैकेजिंग का मटेरियल का वेट सबसे कम होना चाहिए। इवन एलसीएल शिपमेंट में या कंटेनर लोड है वहीं पे भी आपको इवन यू कैन प्लान डोंट यूज वुडन पैलेट्स ऑल्सो।
That type of packaging concepts also available in the market, and we are suggesting them, and we are providing such type of services. Then you cannot use any plywood pallet also for exporting the material, like garments and all. You can directly pack it and you just have to load in the container. तो हम उनको प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, वो अनलोड किस तरह से होगा, लोड किस तरह से होगा, वो फैसिलिटी जहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है वहाँ पे भी हम वो चीज़ एक्सप्लेन करके कि उसको अनलोड किस तरह से करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेनर में मटेरियल किस तरह से लोड हो सकता है, वो हिसाब से हम उनको सजेशंस और डिजाइन भी करके देते हैं। सर आपको एक लास्ट क्वेश्चन, अभी ये सब दे आर सम एक्सपोर्टर 1-2 करोड़ का एक्सपोर्ट है किसी का, दे वांट टू स्टार्ट देयर एक्सपोर्ट्स। सो आप तो लास्ट मोर देन 15 इयर्स यू आर वर्किंग विद द एक्सपोर्टर्स, वेरियस एक्सपोर्टर, तो आपके जो एक्सपोर्टर हमारे जो है उनके लिए एडवाइस क्या दे सकते हैं, मतलब आपका जो ऑन द बेसिस ऑफ उनको सपोज बिजनेस बढ़ाना है, उनको हम बोलते हैं कि सस्टेनेबल एक्सपोर्ट बिजनेस होना चाहिए, नॉट 1 or 2 टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट, तो उनके लिए ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस उनके लिए आप एडवाइस क्या दे सकते हैं? डेफिनेटली जो इनिशियली जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट अभी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए सबसे मेरा पहला एडवाइस रहेगा, देखिए क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑल वो उनका इंटरनल पार्ट है, वो क्लाइंट अप्रूवल देगा, क्वालिटी अप्रूव करेगा, तभी वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा। लेकिन जब भी आप कॉस्ट के लिए कॉस्टिंग जब आप वर्कआउट करते हैं कोई भी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट करने के लिए, आपको पैकेजिंग कॉस्ट, पैकेजिंग डिजाइन ये पहले ही आपका रेडी होना चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारी कंपनीज देखे हैं जिनका ये इश्यू रहता है हमेशा, जो उनका मार्जिन है वो पैकेजिंग मटेरियल में चला जाता है, क्योंकि उन्होंने वो कंसिडर ही नहीं किया होता है। बाद में जब कस्टमर से जब गाइडलाइंस आती है कि हमको इस तरह से पैकेजिंग चाहिए, ये हमारे नॉर्म्स है, ये कंट्री के नॉर्म्स है, या एसटीएम 15 स्टैंडर्ड के हिसाब से ये हमको चाहिए, ये हजार्डस है, नॉन हजार्डस है, हमारे यहाँ पे हैंडलिंग 13 किलो से ऊपर हम मैन्युअली हैंडलिंग नहीं करते हैं, आपको पैलेट के ऊपर ही भेजना है, आपको बॉक्स में भेजना है, 4 वे चाहिए, 2 वे चाहिए, पैकिंग नहीं चाहिए, ये सारी कंडीशन जब बाद में पता चलती है क्लाइंट को, तब जाके वो परेशान होता है। क्योंकि जो प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनको पैकेजिंग कॉस्ट की वजह से वो बिजनेस नहीं कर पाते। तो ऑलवेज आपको पैकेजिंग कॉस्ट और आपके प्रोडक्ट का पैकेजिंग डिजाइन पहले होना चाहिए, उसके बाद आप आपके क्लाइंट को वो कंसिडर करके ही कोड दे दीजिए। या सबसे बेस्ट है, अगर कोई आपसे कोई प्रोडक्ट ले रहा है तो उसको पहले ही पूछ लीजिए कि आपके पैकेजिंग स्टैंडर्ड क्या है, वो हमारे साथ शेयर करिए, वो उसके पैकेजिंग स्टैंडर्ड लेके उसका कॉस्टिंग वर्किंग करके आप जो बोल रहे हैं दिस इज पैकेजिंग कॉस्ट, तो दे विल एग्री दैट कॉस्ट, बिकॉज उनको उनका स्टैंडर्ड है। मतलब ये एट द टाइम ऑफ पैकिंग पीओ जब फाइनल करते हैं उस टाइम वो कोटेशन के टाइम पे ही आपको ये सारी चीजें क्लियर करके लेनी है, ताकि आपका जो मार्जिन है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए, कोई अलग चीज। वन मोर एक लास्ट क्वेश्चन है, नारायण जी ने पूछा है कि इन केस ऑफ टेक्सटाइल अपैरल्स हाउ टेक प्रिकॉशन फ्रॉम ऑयली सरफेस, तो आपने जस्ट वो एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, प्रिकॉशन टेक्सटाइल अपैरल में ऑयली जो सरफेस के कैसे, हाउ विल यू टेक केयर, मतलब पैकिंग कैसा होना चाहिए, इन शॉर्ट इनका क्वेश्चन। ऑयली सरफेस पे बोल रहे हैं उन्होंने, मतलब टेक्सटाइल और टेक्सटाइल जो एटम है, मतलब जो जैसे तो उसके लिए पैकिंग क्या होना चाहिए, इन शॉर्ट उनका क्वेश्चन। टेक्सटाइल के लिए देखिए, टेक्सटाइल के लिए नॉर्मली क्लॉथ पैकिंग होता है। अर्लियर में जब मैंने टेक्सटाइल की कुछ कंपनी को पैकिंग जो किया था, तो नॉर्मली उसके लिए जूट बैग यूज हो गया टेक्सटाइल्स के लिए, जिसमें से हाँ एक इनसाइड एलडीपी फिल्म होता है, और उसके बाहर आउटर पैकिंग जो होता है नॉर्मली जूट का होता है। अभी जूट तो बहुत कॉस्टली हो गया, अर्लियर मेनी पीपल्स आर यूजिंग दैट जूट बैग। और टेक्सटाइल पैकिंग में नॉर्मली आप उसको वैक्यूम अगर आप करते हैं, उसके अंदर की जो हवा जो है वो आप अगर निकाल लेते हैं, तो आपका जो बंडल रहेगा, जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका साइज छोटा हो जाएगा, और इसकी वजह से आपको कंटेनर में ज़्यादा से ज़्यादा आप मटेरियल लोड कर सकते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू वैक्यूम दैट मटेरियल। जब आप पैक करते हैं तो उसको वैक्यूम करना और उसके बाद उसको सील करना एक मेथड है। सर पर्सनली वो कभी मुझसे कांटेक्ट करके तो मैं उनको सब कुछ फोटोग्राफ्स और उसका प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा उनके साथ। सर आपका जेएनपीटी में भी पैकिंग होता है, अंदर पोर्ट पे होता है? अंदर पोर्ट पे नहीं, पोर्ट पे जेएनपीटी में अलाउड नहीं है। जेएनपीटी के बाहर हम सीएफएस पे हम बहुत जगह पे करते हैं, जिनका जिनका रिक्वायरमेंट रहता है वहाँ पे जाके हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मुंद्रा पोर्ट में होता है।
ओके, मुद्रा के अंदर होता है क्या? हाँ, नहीं वहीं पे भी बाहर ही है, सीएफएस लेकिन में? सीएफएस क्लियर पोर्ट के ऊपर वो इंटरनल एजेंसी है जो वही करती है। ओके ओके, सो थैंक यू सर, आपने यू हैव गिवन द वैल्यूएबल टाइम एंड वैल्यूएबल इनपुट्स बिकॉज थैंक यू। पैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. At the time of finalizing the export order, we should consider that sir has said ki we should consider the packing cost at the time of finalization the order. Otherwise, we can हमारा margin सब packing में जा सकता है because packing is also a very important part. So thank you very much, sir, for giving your valuable time during also your schedule is very busy. Thank you 24 miles and Vinayak ji for this platform. अगर किसी को कुछ भी पैकेजिंग के लिए कोई सजेशन चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली मुझे शेयर करें, मैं डेफिनेटली उनके लिए जो भी सजेशन है मैं उनके लिए डेफिनेटली मैं करूँगा. Yes sir, thank you very much, thank you thank you all, thank you for your time. Thank you. So friends, if you have any questions regarding anything, as Jay has asked the questions about the marketing, you can put it in, or I can give the access to talk. Q&A session. Right now it is a Q&A session. You can ask any questions. Anybody is having any questions? Priteji, do you have any questions? I can give the access. You can talk. Question है किसी को? प्रीतेश जी, आपका कुछ क्वेश्चन था, आपने 7 बजे कॉल किया था. किसी का क्वेश्चन रहेगा तो we'll have a session. You can ask. और किसी का क्वेश्चन है? जय, आपका भी कुछ क्वेश्चन रहेगा तो यू कैन आस्क. प्रीतेश जी, यस. सर मैं यही चीज जो पूछ रहा था कि पैकिंग के बारे में तो सर ने बताया, हाँ. बट अभी आगे जो पैकिंग के बाद उसके जो चार्जेस है, हाँ. वो कैसे लगते हैं? सर उन्होंने बोला ना आपको, उन्होंने क्या बोला कि एट द टाइम ऑफ आपका जो ऑर्डर जब आता है, आपका सपोज आपका कुछ कुर्ती का उसका है, तो ऑर्डर जब आपके पास आता है ना, जब आप आपका लैंडेड कॉस्ट निकालते हैं, उसको बोलते हैं कैलकुलेटिंग द लैंडेड कॉस्ट. तो एक्सपोर्ट का जो कॉस्ट कितना आता है, सपोज आपका CIF है, तो आपका पहले रॉ मटेरियल का कॉस्ट आ जाएगा, जो कुछ कपड़े है, उसके बाद पैकिंग का कॉस्ट आएगा, उसके बाद लोकल ट्रांसपोर्ट का आएगा, इंश्योरेंस का आएगा, ECC रहेगा तो ECC. तो वो सब आपको कॉस्ट आपको ये करना है, कॉस्ट कैलकुलेट करना है, उसके बाद ही PO फाइनलाइज करो, पहले PO मत फाइनलाइज करो. उन्होंने बोला था ना कि कुछ लोगों ने PO फाइनलाइज किया एंड उसके बाद उनको समझ में आया कि इसका पैकिंग का रिक्वायरमेंट बहुत हेवी है. तो अंडरस्टैंड द पैकिंग रिक्वायरमेंट बिफोर फाइनलाइजिंग द एक्सपोर्ट का ऑर्डर. उनका यही पॉइंट था. ओके, बस वो कितना PO बनाने मतलब कैसे वो करते हो सब सिस्टम? नहीं, PO बनाने मतलब आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर आया. हाँ सर. वो कुछ ऑफर देंगे कि मुझे ये मटेरियल इसी कॉस्ट में चाहिए, तो आपका रिवर्क होना चाहिए ना. हाँ सर, वो सब रेडी है. अभी जैसे सर मैंने वो जैसे उन्होंने बताया कि ये मटेरियल ये सब चाहिए अपने को, उसके बाद जो चार्जेस लगते हैं, जैसे आज मेरे को किसी एक क्लाइंट ने मेरे को ये पूछा कि अगर आप यहाँ से सूरत से पार्सल भेजते हो तो क्या चार्जेस लगेगा, बाय एयर है या शिपमेंट है, जैसे अपना. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो अभी कितना केजी का रिक्वायरमेंट है? अभी समझो कि मेरे को 50 पीस का ऑर्डर आया है, तो एक पीस के समथिंग 300 या 400 ग्राम का ऑर्डर आता है, तो 20 केजी का है. हाँ, 20 या 25 केजी का एक पार्सल होगा. हाँ, तो 20-25 केजी का रहेगा ना, तो आवर ऑफिस कैन गिव यू द कॉस्ट. आपको उसका हम आपको टोटल पिकअप टू डिलीवरी का कॉस्ट देंगे आपको. वो हमारा ऑफिस देगा. तो आप तो बताओगे. हाँ, पिकअप टू डिलीवरी आपका कॉस्ट देंगे. हाँ, वो क्लियरेंस बिलेंस सबका कॉस्ट देंगे हम आपको. सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, पैकिंग, आपको मटेरियल पैकिंग का जो कुछ रहता है वो रेडी रखना पड़ेगा, इंक्लूडिंग आपको डॉक्यूमेंट. क्या मतलब मेरे को एक पर्टिकुलर. हाँ, मैं आपको क्या करता हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट सब रेडी. हाँ, ऑफिस का मैं ईमेल आईडी भेज देता हूँ यहाँ, और ये करता हूँ, ईमेल आईडी और नंबर देता हूँ, तो उनको कांटेक्ट करेंगे ना, यू विल गेट अ प्राइस.
ओके सर। हाँ, तो आपको वो मिल जाएगा, तो आपको उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत, यू फोकस ऑन आपका गेटिंग द बायर और उसके ऊपर ही फोकस करो। ओके सर। मैंने आपको व्हाट्सएप इसमें चैट में डाला है। तो आपका और क्या पॉइंट था सर? आपका एक क्वेश्चन था, आपको कुछ आपका 7-6 आपने 5-6 बजे कॉल किया था। 6 हाँ, एक लाइसेंस के बारे में मैंने कॉल किया था। तो आपको क्या मेरे को आपका, हाँ आईसी, देखो आईसी एक इम्पोर्टेंट होता है। पहली बार हाँ आईसी चाहिए, उसके बाद आपका एडी ड्रॉबैक एक रजिस्ट्रेशन होता है। आप कौन से पोर्ट से भेजेंगे? अभी आप गुजरात कौन से लोकेशन पे हो आप? सूरत, हाँ तो शायद, गुजरात में सूरत। हाँ एयर से जाएगा तो शायद मुंबई से जाएगा, शायद हाँ एयर से जाएगा हाँ, तो आपको मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर, और सी से जाएगा तो कौन से पोर्ट से जाएगा? आपका सी से एक्सपोर्ट होता है? शिपमेंट में ना। हाँ सी से होता है, मतलब एक्सपोर्ट होता है क्या अभी? मतलब एयर का होता है, सी से होता है क्या? अभी शुरू किया है? नहीं, अभी स्टार्ट ही किया मैंने सर। ठीक है, तो आपको एडी ड्रॉबैक का एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो मुंबई एयरपोर्ट में हम करके लेंगे। वो ओके करना होता है। आपका एक आइस गेट का रजिस्ट्रेशन होता है, दूसरा आपका एक इसका होता है बीजेएफटी का रजिस्ट्रेशन, वो बेसिक होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो करके रखो। आपका सिर्फ चेक करो, ओके। सूरत से आपका एक्सपोर्ट के लिए मुंबई एयरपोर्ट से ही जाएगा ना? हाँ, सूरत से तो एक अहमदाबाद है और एक मुंबई इंटरनेशनल एक्सपोर्ट, नहीं होता ना, दोनों से। एक्सपोर्ट का नहीं होता, तो वो मुंबई से जाएगा वो। हाँ, अहमदाबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पर ट्रांसपोर्ट के लिए मेरे को नहीं पता। कार्गो का नहीं, कार्गो का नहीं है। कार्गो का नहीं है तो मुंबई से ही हाँ होगा। ठीक है, तो क्या करो, मैंने चैट बॉक्स में अभी डाला है, उनको ईमेल आईडी करो कि आई वांट हाँ, टू डू बेसिक रजिस्ट्रेशन, आई एम फ्रॉम सूरत, ओके ऐसा मेरा नंबर दे दो। मेरा नंबर आपके पास ऑलरेडी है, तो उनको मेरा नाम लेके यू कैन सेंड द ईमेल, और मैंने नंबर भी दिया है ऑफिस का। कुछ कंसर्न आया तो मुझे व्हाट्सएप ईमेल कॉल करो। ओके सर। इतना ही कंसर्न था ना आपका? हाँ, मेरे को वही है, मेरे को क्या आज एक दो पर्सन ने पूछा कि आपके पास लाइसेंस रेडी था। लाइसेंस रेडी है तो आगे अगर ऑर्डर आएगा तो नहीं वो नहीं, सब बोला, लाइसेंस वो नहीं, सब उसमें मेरा। और क्या, आप और क्या लगता है? एलयूटी लगता है आपका, जीएसटी लगता है, और वन टाइम बेसिक लगता है, वो बेसिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। हाँ, बस वो तो अभी जैसे मेरा कोई ऑर्डर आएगा, मैं आपसे आपकी टीम से कांटेक्ट कर लूंगा कि अपना ये ऑर्डर आया है, वो इस सब से तो आगे जो ठीक है प्रोसीजर होगी अपने बैठ के वो समझ लेंगे। ठीक है, ओके, तो करो। और अभी आपको ग्रुप पे ऐड किया है, तो यू ओके कैन सर। अटेंड करो। अभी नेक्स्ट का सेशन है उभारते सितारे, सीडीबी फॉर उभारते सितारे फॉर एक्सपोर्टर, वो सेशन है। ओके सर। हाँ, जागृति मैम, आपको क्या चाहिए? आपको वेबसाइट चाहिए उनका? गुलमर उनका नाम है, गुलमोर, गुलमोर करके है, सीवर्दी पैकिंग करके है। हाँ, गुलमोर करके है। गुलमोर पैकटेक है, वो पुणे में ही है। नहीं तो सीवर्दी पैकिंग है, उनका वेबसाइट मिल जाएगा वहां। ठीक है, और जो आपको कुछ क्वेश्चन है? क्वेश्चन है क्या आपको कुछ? ठीक है, इफ यू एनी क्वेश्चंस तो नेक्स्ट वीक का, नेक्स्ट वेडनेसडे का हमारा सेशन है, थर्ड अबव क्वेश्चन। ओके, थर्ड अबव क्वेश्चंस। ओके, दिस इज अबव क्वेश्चंस। ओके, ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट का है सेशन वेडनेसडे को होने वाला है कि सिडबी का है। सिडबी के मैनेजर आने वाले हैं, और वो उभरते सितारे स्कीम जो है एक्सपोर्टर के लिए, वो एक्सप्लेन करने वाले हैं, और बाकी का क्या क्या स्कीम है फॉर द एक्सपोर्टर, दैट विल बी गोइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, मीनवाइल आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, और कुछ भी क्वेरी रहेगा तो आप यू कैन पुट इट ऑन ग्रुप। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।